Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have brought you some questions which have been picked from previous year papers and are basically on people and environment unit, which is a very important unit in the paper 1 of NTA-UGC-NET exam. So if you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe to my channel and share my videos with your friends who are preparing for the similar exam. Okay, so today we would be talking about all the questions that have been previously asked in the NTA-UGC-NET paper, which are related to people and environment unit. And please make sure that you make some notes of the questions that I'm discussing, because these questions have been very frequently asked. So I have included those questions which have been asked again and again. So please make sure that you make notes and pay attention. So let's start with the first question. The acronym INSAT stands for Indian Satellite, Indian National Satellite, Indian National Satellite Training, or none of these. So the acronym INSAT stands for Indian National Satellite, which is the option B. Then lunar eclipse occurs when the sun comes in between the moon and the earth. The moon comes in between the earth and the sun. The earth comes in between the sun and the moon, or none of these. So lunar eclipse occurs basically when earth comes in between the sun and the moon. So how it happens is that this is the sun, here comes the earth, and its shadow falls on the moon. This is the moon. Okay, so this is what is happening in this whole process. Okay, so this is the process of lunar eclipse. Which one of the following is used to stop bleeding? Vitamin A, vitamin U, vitamin B, or vitamin K? So option D is the correct answer. Vitamin K is used to stop bleeding. Fly ash produced in thermal power plants is an eco-friendly resource for use in agriculture as micronutrient, wasteland development, dam and water holding structures, or brick industry. So these all the options are correct ones. Okay, so fly ash produced in thermal power plants is an eco-friendly resource which is used in all of the above given option. So the fourth option is the correct answer. Which of the following natural disasters has no definite beginning or end? Earthquakes, landslides, hurricanes, or drought? So drought जो सूखा होता है उसका कोई डेफिनेट बिगनिंग नहीं होती है और कोई एंड नहीं होता है. वो कब शुरू हो जाता है, कब ख़त्म होता है, यू डोंट हैव एनी फिक्स्ड टाइम कि अभी से शुरू हुआ था और अभी ख़त्म हो गया है. ओके, सो इट हैज़ नो फिक्स्ड बिगिनिंग और एंड. We have an assertion and reason in which assertion says indoor air pollution is a serious health hazard. This is a true thing. Then the reason says the dispersal of air pollutants is limited in the indoor environment. So जो indoor environment है उसके अंदर air pollutants का जो dispersal है वो बहुत ही limited होता है, क्योंकि एक बंद जगह में वो अच्छे से disperse नहीं हो पाते. So both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of A कि dispersal अच्छे से नहीं हो पाता है, इस वजह से indoor air pollution एक serious health hazard बन जाता है. So option A is the correct answer. In terms of their contribution to the total power generation in India, identify the correct sequence of energy resources: thermal power plant, which is denoted by TPP, large hydropower plants, which is LHP, nuclear energy, which is NE, and renewable energy, which is RE, which includes solar energy. Renewable energy में solar energy भी आती है, wind energy भी आ रही है, biomass भी आ रही है, और small hydropower projects भी आ रहे हैं. सो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखें एनर्जी रिसोर्सेज का, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो थर्मल पावर प्लांट्स का है. देन कम्स द रिन्यूएबल एनर्जी, देन कम्स द लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स, एंड द लास्ट वन इज द न्यूक्लियर एनर्जी. सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया? जो हमारे रिवर्स हैं इंडिया के, उनमें मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है? अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, untreated sewage, agricultural cut-off, or thermal power plants. So if you have seen the rivers, तो रिवर्स में आपने देखा होगा कि जो भी सिटी के वेस्ट वाटर है या सीवेज वाटर है वो डंप होता है in the rivers of our country. So untreated sewage is considered as a major source of pollution in the rivers. Irritation in eyes is caused by which pollutant? Sulfur dioxide, ozone, peroxyacetyl nitrate, or N2O. So here PAN, which is peroxyacetyl nitrate, is the major cause of irritation in eyes.
Which is the source of chlorofluorocarbons? Thermal power plants, automobiles, refrigerators and air conditioners, or fertilizers. So CFCs or chlorofluorocarbons are being produced in large amounts by the refrigerators and air conditioners. Which of the following is not a natural renewable resource? So clean air, fertile soil and fresh water are natural renewable resources, but salt is not a natural renewable resource. So that is what being asked in this question कि कौन सा natural renewable resource नहीं है. ठीक है, तो क्लीन एयर हमें नेचर प्रोवाइड करता है, फर्टाइल सॉइल भी हमें नेचर से मिल रही है, ठीक है, और फ्रेश वाटर भी हमें नेचर से मिल रहा है, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है कि ये टाइम बाय टाइम रेप्लेनिश होते रहेंगे, इनका क्वांटिटी कभी ख़त्म नहीं होगी. पर जो सॉल्ट है वो नेचुरल नहीं है, उसे हम प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है, अपने प्रोसेस के थ्रू, अपने कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर? इनमें से कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज़ नहीं किया जाता है पानी के अंदर? टोटल डिजॉल्व सॉलिड यूज़ किया जाता है, कॉलीफॉर्म काउंट भी यूज़ किया जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी यूज़ किया जाता है, बट डेंसिटी इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर इन द वाटर. S and P waves are associated with floods, wind energy, earthquakes और tidal energy. तो S और P waves क्या होती हैं? They are secondary and primary waves. और ये waves कहाँ पर किससे associated हैं? They are being associated with the earthquakes, which is the option C. Now we have a match the following, जिसमें आपको कुछ लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, और आपको उनको मैच करना है. तो ओजोन होल जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूवी रेडिएशंस. ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? इट इज़ मेनली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें मीथेन आती है. नेचुरल हजार्ड में कौन आ गया है? आपका सुनामी आ गया है, नेचुरल हजार्ड. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोसेंट्रिज्म. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप इकोसिस्टम सेंटर्ड हो जाते हैं, आप इकोसिस्टम के बारे में सोचते हैं, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए, जो कि आपके मैच द फॉलोइंग को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है. Then Montreal Protocol refers to cooperation among UN members countries to combat climate change, phasing out the consumption and production of ozone depleting substances, ensuring environmental sustainability, safeguarding societal quality of life worldwide. So Montreal Protocol refers to phasing out the consumption and production of ozone depleting सब्सटेंसेस. तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को निकालने के लिए, उनके कंजप्शन को बंद करने के लिए और उनके प्रोडक्शन को बंद करने के लिए बेसिकली कंसर्न था. द गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर. जो गंगा एक्शन प्लान था वो 1988 में इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था. Identify the correct sequence of energy sources in order of their share in power sector in India. तो अभी हमने इसके बारे में बात की है. तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें थर्मल पावर प्लांट था, उसमें आपकी रिन्यूएबल एनर्जी थी, देन कम्स द लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड देन कम्स अ न्यूक्लियर एनर्जी. बट वी हैव विंड एनर्जी ओवर हियर, सो हियर वी हैव thermal energy, then the nuclear energy, then the hydro power plants, and then the wind energy. Chromium as a contaminant in drinking water in excess of permissible levels causes skeletal damage, gastrointestinal problems, dermal and nervous problems और liver और kidney problems. तो क्रोमियम का अगर कंटेमिनेशन ज़्यादा हो जाता है पानी में, एक्सेस ऑफ क्रोमियम हो जाता है above the permissible limit, so it causes dermal and nervous problems, which is the option C. The main precursor of winter smoke are N2O and hydrocarbons, NOx and hydrocarbons, sulfur dioxide and hydrocarbons, sulfur dioxide and ozone. So the main precursor of winter smoke are NOx, nitrogen oxides, जो भी जितने भी तरीके के होते हैं, and the hydrocarbons, which is the option B. Which of the following is a source of methane? This is a question which has been asked several times. Okay, so wetlands, foam industry, thermal power plants or cement industry. So the major source of methane is wetlands. Minamata disaster in Japan was caused by the pollution due to lead, mercury, cadmium or zinc. So Minamata was caused by the contamination of cadmium. Okay, and Itai was caused by the mercury contamination. I'll write it over here. Itai. These two diseases are very commonly asked in your exam, so you should know about them.
Biomagnification means increase in the concentration of pollutants in living organisms, number of species, size of living organisms or biomass. So biomagnification means increase in the concentration of pollutants in the living organism. Pollutants का जब increase हो जाता है किसी भी concentration of pollutants जब increase हो जाता है किसी भी living organism में तो उसको biomagnification कहा जाता है. Nagoya Protocol is related to climate change, ozone depletion, hazardous waste or biodiversity. So Nagoya Protocol is basically related with the biodiversity, which is the option D. The second most important source after fossil fuels contributing to India's energy needs is solar energy, nuclear energy, hydropower or wind energy. So the second most important source after fossil fuels which is contributing to India's energy needs is solar energy. तो फॉसिल फ्यूल्स के बाद सोलर एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स है जो कि इंडिया की एनर्जी डिमांड जो है, एनर्जी नीड्स जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है उनको पूरा कर रहा है. In case of earthquakes, an increase of magnitude 1 on Richter scale implies a 10-fold increase in the amplitude of seismic waves. अगर आपका Richter scale में 1, 2, 3, 4 या फिर पॉइंट्स में दिया हुआ है कुछ, ठीक है, अगर 1 से 2 आ रहा है तो हमें तो ये 1 से 2 लग रहा है, बट एक्चुअल में जो सीज्मिक वेव्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? Literacy rate, gross enrollment ratio, life expectancy, or the option C, which is the sex ratio. So here we have the sex ratio as the correct option, which is not the indicator. It is not a measure of human development index. Which of the following pollutants affects the respiratory tract in humans? We have carbon monoxide, nitric oxide, sulfur dioxide, and aerosols. So among the given pollutants, respiratory tract of human beings is being affected by sulfur dioxide, which is the option C. Which of the following pollutants is not emitted from the transport sector? So oxides of nitrogen, which are NOx, are emitted in large amounts by the transportation sector. Chlorofluorocarbons are not emitted by the transport sector. Okay, so the option B is the correct answer over here. Carbon monoxide is being released by the transportation sector. It is a major pollutant by the transportation sector. Then polyaromatic hydrocarbons are also being emitted. Which of the following sources of energy has the maximum potential in India? So we have solar energy, wind energy, ocean thermal energy and tidal energy. So solar energy has the maximum potential in India. Okay. Which of the following is not a source of pollution in soil? Transport sector, agriculture sector, thermal power plants or hydropower plants. So agriculture sector is not a source of pollution in the soil. So option B is the correct answer. Which of the following is not a natural hazard? Earthquake is a natural hazard, tsunami is a natural hazard, flash floods is a natural hazard, but nuclear accident is not a natural hazard, it is a man-made disaster. We have developed nuclear systems, okay, and that leads to nuclear accidents. Ecological footprint represents area of productive land and water to meet the resource requirement, energy consumption, CO2 emission per person or forest cover. So ecological footprint basically means it represents area of productive land and water to meet the resources requirement. Occurrence of natural hazards is affected by land use changes, drainage and construction, ozone depletion, climate change. तो हमें बताना है इनमें से किसकी वजह से natural hazard का जो occurrence है वो affect होता है. So it is being affected by the land use changes, drainage and construction and climate change. So only the A, B, D options are correct, which is being denoted by the second option. Among the following fuels of energy, which is most environment friendly? So biogas, CNG, hydrogen, ethanol. In all of these, hydrogen is the most environment friendly fuel. Which of the following pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activity? Nitrous oxide is being produced, methane is also being produced, carbon dioxide is also being produced, but chlorofluorocarbons are not being produced naturally or as a result of any of the industrial activities. We have an assertion and reason. In urban areas, smoke episodes occur frequently in winters. This is true. Reason says in winters a lot of biomass is burned,
by people for heating purposes or to keep themselves warm. रीज़न ये कह रहा है कि विंटर टाइम में बहुत सारे लोग बहुत सारा बायोमास चलाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हीटिंग और टू कीप देमसेल्व्स वार्म. सो द रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट रीज़न. सो हेयर इट इज़ अ राइट थिंग, ऐसा होता है, बट ये रीज़न आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो द ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट द रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट explanation of the assertion given. Then Sustainable Development Goals, which is SDGs, are formally known as Transforming Our World 2030 Agenda, Sustainable Living for All 2022 Agenda, Life of Dignity for All 2022 Agenda, One Planet One People 2030 Agenda. So Transforming Our World 2030 Agenda is also an alternative term used for the Sustainable Development Goals. An earthquake of a magnitude in the range of 6 to 6.9 on the Richter scale is considered as a very strong earthquake. Not very strong, it is a strong earthquake. Okay, so moderate, we have major, we have great. I will try to discuss with you the Richter scale, which number denotes, what range denotes what kind of earthquake very soon. Although I have discussed about it in one of my videos, but that is basically for the environmental sciences paper. So I'll try to discuss it in this series also. So stay tuned to my channel for that. Frequent episodes of dense smoke in winter season in the National Capital Region (NCR) can be attributed to stubble burning, biomass burning in rural households, transport, transboundary movement of pollutants. So all of these contribute to the frequent episodes of dense smoke in winter season in the NCR region of our country. Municipal solid waste MSW comprises of household waste, sanitation residues, waste from streets, construction and demolition debris. So all of these constitute the municipal solid waste. A source of renewable power which can be developed with minimum cost is windmills, tidal power, biomass power or geothermal energy. So source of renewable power which can be developed within minimal cost is biomass power. So basically in biomass power you use the biomass which is of no use. Okay, so it is a very cheap resource for the development of power, for the development of energy. How much carbon is being added to the atmosphere by burning of fossil fuels? फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से कितनी कार्बन ऐड हो रही है एटमॉस्फेयर में? सो इट इज़ 6 to 9 billion tons, 9 to 12 billion tons, 4 to 6 billion tons or 2 to 6 billion tons. So 6 to 9 billion tons of carbon is being added into the atmosphere by the burning of fossil fuels. Natural vegetation of an area needs to be preserved for the future, mainly for the purpose or जो किसी भी एरिया का नेचुरल वेजिटेशन है उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना चाहिए. किस पर्पस से? प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर बर्ड्स, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीशीज़ और स्टडी बाय साइंटिस्ट. सो हमारा पर्पस जो होना चाहिए इट इज़ टू प्रोवाइड मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीशीज़. हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा जिससे न्यू स्पीशीज़ ब्रीड कर सके. ठीक है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैज़ बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ change in weather, sinking of islands, loss of vegetation और extinction of animals. जो volcanic eruption है उसका सबसे ज़्यादा significant impact जो होता है it is in the change of the weather. It can be seen in the change in the weather. In large parts of eastern India, the groundwater is contaminated by arsenic, lead, mercury or nickel. So in the large parts of eastern India, the groundwater is being contaminated by arsenic, which is the option 1. Taj Mahal is mainly threatened by the deleterious effects of. ताज महल का जो हार्म हुई है वो किसकी वजह से हुई है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिलेटेरियस इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन is least among the following sources of energy in case of solar, wind, geothermal और nuclear. जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की एफिशिएंसी होती है, इफ़ेक्टिविटी होती है, वो सबसे कम होती है जियोथर्मल एनर्जी में. ओके, जियोथर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस? सो द रेस्पिरेटरी डिसीजेस
किससे ज़्यादातर होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नो, कार्बन मोनोऑक्साइड नो, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नहीं है, बट सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स दे एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कॉज सर्टेन डिफरेंट respiratory disorders or diseases. So option 4 is the correct answer. Tamil Nadu coastal belt has drinking water shortage due to high evaporation, sea water flooding due to tsunami, over exploitation of groundwater by tube wells और seepage of sea water. सो तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट जो है उसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर के अंदर सीपेज ऑफ सी वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है इट बिकम्स ग्राउंड वाटर जो है इट बिकम्स वेरी अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. We have an assertion and reason in which assertion says aerosols have potential for modifying the climate. This is correct. Reason says aerosols interact with both short waves and radiations. तो एरोजोल्स शॉर्ट वेव रेडिएशन से और वेव से रिएक्ट करते हैं. ओके तो यहाँ पे शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन आएगा वैसे बेसिकली. ओके सो आई हैव मिस्ड दिस टर्म. तो एरोजोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशंस दोनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन गिवन. So that's all for this video. I have discussed around 50 questions which are from the people and environment unit. So I hope you have made some notes or taken screenshots of the important questions. So go through this video again and again so that you can remember questions easily when they come in your exams, and I assure you at least 2 to 3 questions can be from this video, and sometimes it might happen that all the 5 questions from may come from this video because I have covered different topics and these topics are being asked again and again in your exam. तो टॉपिक्स यही रहेंगे, इनमें से क्वेश्चंस जो आएंगे वो घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे. तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं तो आप अगर आपको घुमा फिरा के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ press the like button and subscribe to my channel if you haven't subscribed, and share my video with your friends so that everybody who is preparing for this exam can get help from my videos. And thank you very much for watching.